Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन ऑनलाइन। लास्ट वीडियो में हम बात किए थे एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्शन के बारे में। एप्टीट्यूड कैसे पूछा जाता है, एप्टीट्यूड आपका कौन से एग्जाम में आते हैं, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है लिंक में, जाके पहले देख लीजिए। तो एप्टीट्यूड का इम्पोर्टेंस बहुत है, मतलब कैट एग्जाम से शुरू करके जो भी आपका रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सब एग्जाम में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो एप्टीट्यूड सेक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये सेशन में मैं ये बात करूंगा परसेंटेज के बारे में, ठीक है। तो आप परसेंटेज के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है एप्टीट्यूड में, मैं 5-6 तरीका का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि परसेंटेज से कौन सा कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ ऐसा टाइप बनाया, मिस्टेक ऑपरेशन। तो मिस्टेक ऑपरेशन का क्या मतलब है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन रहेगा कि ये हो सकता था, यानी ये होना चाहिए था पर ये हो गया। तो वो वाला कैटेगरी को मैं मिस्टेक ऑपरेशन कैटेगरी मिस्टेक ऑपरेशन के अंडर लिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ए नंबर इज मिस्टेकनली डिवाइडेड बाय 10 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 10, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा आपका, तो आपको तो ये डायरेक्ट पता है कि परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ एरर, ओके, परसेंटेज ऑफ एरर इक्वल टू व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू, ओके, व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू माइनस व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपका नहीं है, तो मैं लिख लेता हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ओके। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, ओके, into 100. So this is the percentage of error. So what is the actual value? So divided by 10 instead of being multiplied by 10. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो नंबर है उसको मेरे को 10 में मल्टीप्लाई करना था, पर मैं 10 में डिवाइड कर लिया। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे मैं नंबर को अज्यूम कर लेता हूँ, लेट द नंबर इज x। सो एक्चुअल वैल्यू क्या होगा 10x, पर मैं किया क्या यहाँ पे, आई हैव डिवाइडेड द नंबर विथ 10, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू 10x into 100. So if you will calculate this thing, it will come like 10 minus 1 by 10, which is 0.1 divided by 10 into 100, okay. So what is the value of this thing? See, 10 minus 10 is 1, okay, 1 into 100 is 100, minus 0.1 by 10 is 0.01 into 100 is how much? This is, you can like 0.1 into 100 is 10 by 10, okay. So this is 1. So what is the percentage of error? 99%, okay. So this is the correct answer. So आप देख सकते हो बहुत आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी करना है आपको, ठीक है, और सब चीज तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन को आते हैं। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर चेंज्ड बाय +10% एंड -10%। परसेंटेज ऑफ चेंज इन एरिया इज हाउ मच। सो यहाँ पे क्या करना था मेरे को, वो सेम परसेंटेज ऑफ एरिया यानी परसेंटेज ऑफ चेंज इन एरिया, ओके। सो सेम एज दिस थिंग परसेंटेज ऑफ एरर। तो यहाँ पे मैं क्या आप देख सकते हो, तो व्हाट इज द न्यू एरिया, ओके, व्हाट इज द न्यू एरिया, देन व्हाट वाज द एरिया, ओके, व्हाट वाज द एरिया, द यू कैन टेल लाइक ओल्ड एरिया, व्हाट इज द ओल्ड एरिया एंड डिवाइडेड बाय द ओल्ड एरिया, ओके। दिस इज द परसेंटेज चेंज, ओके, इक्वल दिस थिंग इनटू 100, ओके। सो व्हाट इज द न्यू एरिया? द न्यू एरिया इज लेंथ इज चेंज्ड बाई 10%, ओके, लेंथ इज चेंज्ड बाई 10%, यानी लेंथ कितना हो गया L। इफ आई हैव अज्यूम्ड लाइक द लेंथ इज L, देन हाउ मच इज L नाउ? L प्लस 10% ऑफ L, ओके। तो व्हाट इज दिस थिंग 1.1 L, ओके, इनटू B, हाउ मच विल बी द B वैल्यू, द breadth will be -10%, okay. So if I have assumed B as the breadth, then B minus 10% of B, okay. So what is the new B? New B will be 0.9 of B, okay, minus old area is LB, okay, length into, so old area is LB, okay. So 1.1 L 0.9 B. So what is the value of this thing? 1.1 L 0.9 B, okay. 1.11 into 9 is 99, okay. So 0.99 and this thing is -1, okay, into 100, okay. So it will be 1 minus 0.99, it will be 0.01 into 100 is -1%. So यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि साइन क्या है, द साइन इज माइनस, सो द एरिया डिक्रीजेस, ओके।
सो व्हाट इज द करेक्ट थिंग, -1%। तो ये मिस्टेक ऑपरेशन का 2 चीज हम कर लिए, और भी है शायद 2 क्वेश्चन, वो भी देख लेंगे। A number when reversed becomes 45% greater than the original. By how much percentage is the unit place digit lesser than the 10th place digit? ओके, ये हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आता है नंबर के बारे में। ओके, तो नंबर का यूनिट प्लेस और डेसिमल प्लेस यानी जो आपका 10th प्लेस है वो उसको बेस करके हमेशा क्वेश्चन आता है। तो उसमें कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को कि जस्ट assume the number as xy. ओके, if the number is reversed, then the new number is yx. Okay, I mean only the unit place and the 10th place, these 2 places are reversed. Okay, xy becomes yx. So I can write the new number as 10y, I mean 10 into y, because the place is 10 here. Okay, 10y plus x यहाँ पे, क्योंकि ये 10 प्लेस नंबर है, ये यूनिट प्लेस नंबर है, तो ये हो गया 10y plus x इक्वल टू हाउ मच, 45% ग्रेटर। सो 45% ग्रेटर मतलब कितना हो जाएगा, जो पुराना नंबर था मेरे पास 10x plus y, xy को मैं 10x plus y लिख सकता हूँ उसका नंबर का फॉर्म में, 10x plus y इंटू 1.45। ये तो पता हो गया होगा क्यों 1.45 कर रहा हूँ, क्योंकि इट इंक्रीजेस बाई 45%। सो इसको मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा इसको सॉल्व करो तो 10y plus x equal to, it will be 14.5x plus y into, I mean 1.45y. सो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे मैं इधर ले आऊंगा तो आ जाएगा आपका y by x. ओके, यहाँ पे आपका y by x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13.5, 14.5 minus 1, 13.5, 10 minus 1, so here it will be 8.5. so y by x का वैल्यू इतना आ गया। तो मेरे को करना क्या है, by how much percentage the unit place digit, what is the unit place digit here, y is lesser than the 10 place. Okay, so y minus x divided by x into 100, this thing I have to find. So what is the value of y by x, 13.5y 8.5. okay, 13.5y 8.5 minus 1 into 100. okay, so what is 13.5, you can directly write, I mean 13.5 into 100 divided by 8.5, I mean how much, 13.5, otherwise you can take the LCM as 8.5, 13.5 minus 8.5 is 5, so 500 divided by 8.5, so it is slightly lesser than 60%, slightly lesser than 60%, slightly lesser than 60%, so the correct answer is 57.8%. Now the next thing is, I recently got promotion combined with the 23% hike in salary, but due to recession my company reduced my salary to 32%, by 32%. What was the net change in my salary? So इसमें क्या, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान सा है। I can take the, I mean now you can take the salary as x. Okay, if I'll take the salary as x, this was my old salary. Okay, old salary. So 23% इसमें हाइक हुआ है, 23% बढ़ा है, तो न्यू सैलरी हाउ मच, new salary becomes, otherwise you can do one thing, you can directly take this, which I mean I can take the salary as x. Okay, x equal to 100, I can take the new, I mean the old salary as 100। फिर इसके बाद क्या करना है, इसमें 23% हाइक हुआ है, इसका मतलब 123 हो गया मेरा सैलरी, बट ड्यू टू रिसेशन माई कंपनी रिड्यूस माई सैलरी बाई 32%। तो इसके बाद क्या है, इसका 32% रिड्यूस होगा। व्हाट इज द 32% ऑफ 123, 123 का 32%। ओके, सो 123 इंटू व्हाट इज 1 minus 0.32, 1 minus 0.32 इज 0.78। ओके, 0.78, okay, 0.78, so 123 into 0.78 is my current salary. Okay, what is the net change in my salary, what is the net change, I mean 123 into 0.78 minus 100 divided by 100 into 100. Okay, so what is this thing, 123.78, so how much this thing is given us, 123.78, 120, this is 1C in the question, it is given as 1.23 into 0.77, so what is the value of this thing, 94.71 minus 100, 94.71 minus 100 is how much, 5.29%, I mean negative of 5.29 or 28, something like that. So I can take the answer as this thing, 5.29%। तो एक तरीका का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं
कंपैरिजन प्रॉब्लम। तो कंपैरिजन प्रॉब्लम से क्या होता है, सी विकी सैलरी 75% मोर देन आसू सैलरी। विकी गॉट a raise of 40% on his own while Asu got a raise of 25%. By what percent Vicky's salary more than Asu's? Okay, I can directly assume as the salary of Asu is 100. Okay, मैं इसको assume कर रहा हूँ कि आसू का सैलरी 100 है। तो क्या हुआ, विकी गॉट a raise of 40, और तो विकी का कितना होगा, क्योंकि 75% मोर तो 175। तो आफ्टर रेजिंग द सैलरी व्हाट इज द करंट सैलरी ऑफ आसू, इट इज 125, और इसका कितना है विकी का 175 में कितना 25% इंक्रीज है। आसू गॉट ए रेज ऑफ 25%, तो 175 में 25% इंक्रीज है, तो आपका विकी का कितना हो जाएगा, 175 में कितना परसेंट इंक्रीज है विकी का 40%। सो दिस इज 175 इंटू 1.4। तो या यू कैन कीप 175 इंटू 1.4। आफ्टर दैट व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, बाय व्हाट परसेंट विकी सैलरी इज मोर देन आसूस। सो व्हाट इज द करंट विकी सैलरी, 175 इंटू 1.4 माइनस आसू का सैलरी कितना है 125 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ओके, so 175 into 1.4 minus 125, so you know what is 175, 125 into 1.4. okay, this is 125 into 1.4, 125 into 1.4, again this is again 1.4 minus 125, this is 125 into 100. So if I'll take 125 as common, then 125 will be like 125 ऊपर भी है नीचे भी कट जाएगा, तो 1.4 होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, 1.4 का होल स्क्वायर माइनस 1 विल बी लाइक हाउ मच 0.96 इंटू 100, दिस इज 96%। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 175 इक्वल टू 125 इंटू 1.4, तो ये बार बार आप करने से मतलब एप्टीट्यूड बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार न्यूमेरिक देखेंगे तो ये हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखेंगे द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 5500, number of males increased by 11% and the number of female increased by 20%. New population becomes 6300. Population of female is how much? If I'll take the population of male is as X and female as Y, then I can write like number of male increased by 11%. So the new male, I mean number of male will be 1.11x. Okay, and female will be how much? By 20%. Okay, so it will be 1.2 into Y. So what is the new thing? New population 6300, but it was x plus y equal to 5500. Okay, so you got two equation. You have to solve these two equation. How? So I can take like this. If I'll multiply this equation 2, this is equation 1, this is equation 2. If I'll multiply the equation 2 by how much 10, then I can like 11x plus 12y. I neglected like 11.1. Okay, I have taken only 11x plus 12y, y equal to how much? 6300, and here x plus y equal to 5500. Okay, so if in this equation I can write 11 into how much is x, 5500 minus y plus 12y equal to 6300. Okay, so you just like solve this thing. 11 into 5500 is how much? This will be like 60500 minus 11y plus 12y, so y equal to 63. Okay, so y will be 63000 minus 60500, which is 2500. I have taken y as the female population. So what is the female population? 2500. So this is the correct answer. तो इसके बाद हम देखेंगे और दो क्वेश्चन है मेरे पास। A person saves 6% of his income. 2 years later, his income shoots up by 15%, but his savings remain the same. Find the hike in his expenditure. तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं आप देखो कि मैं मान लेता हूँ कि पर्सन एक पहला जो पर्सन है उसका इनकम था x, 6% ऑफ हिज इनकम सेव में लगाता था वो, तो इसका 6% कितना हो गया आपका 0.06x, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया x माइनस 0.06x। तो नेक्स्ट क्या हो गया, हिज इनकम शुड सर्वाइव 15%, सो नया इनकम कितना हो गया 1.15x। फिर से क्या, बट सेविंग्स रिमेन द सेम, यानी सेविंग कितना 6% ही सेविंग रहेगा, यानी इसका 0.06 इंटू 1.15x इतना सेविंग है। तो अभी एक्सपेंडिचर कितना हो गया
सब 1.15x माइनस 0.06 इंटू 1.15x। तो ये एक्सपेंडिचर पहले था, ये एक्सपेंडिचर अभी है। फाइंड द हाइक इन, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ, दिस थिंग माइनस दिस थिंग डिवाइडेड बाई दिस थिंग, this thing into 100. Okay, so if I'll take like this, it will come like 1.15x minus 0.06 into 1.15x minus x plus 0.06x divided by how much, x minus 0.06x into 100. So this is the final into 100. So this is the final expression. Okay, if I'll calculate this thing, how much will I get? Some see, if I calculate this thing, how much will I get? 1.15 direct minus 1, so it will be 0.15 into 100. Okay, so it will be 15%. So this is the correct answer. Next question, and this is the last question. A mixture of 80 liter of milk and water. So 80 liter क्या है, milk भी है, water भी है. 25% of mixture is milk. So how much milk कितना है उसमें, 80 का 25%. Okay, so which is 20 liter. And the next thing is how much water should we added to the mixture so that milk becomes 20% of the mixture. Okay, so हमको क्या करना है कि मिल्क जो मिक्सचर है उसमें उसका 20% बनाना है. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट x liter of water we have to add. Okay, x liter of water we have to add. So what is the new volume of the water, I mean what is the new volume of the mixture, it will be 80 plus x. Okay, so क्या करना है हमको, 20% of the mixture बनाना है, किसको, मिल्क को. सो 20% ऑफ द मिक्सचर का क्या मतलब हुआ कि जो मिक्सचर मेरे पास है 20% ऑफ द मिक्सचर, आई मीन 80 प्लस एक्स शुड बी 20. यहाँ इसका 20 में कहाँ से लाया कि मेरे पास ये है मिल्क कितना, 20 लीटर है, तो मिल्क का अमाउंट में 20, मतलब मिल्क का अमाउंट 20 रहेगा ही, पर मेरे को इसमें क्या x लीटर में क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया. तो इसका वैल्यू कितना हो गया, आप कैलकुलेट कर लो तुरंत, 20 कट गया, तो 80 प्लस x इक्वल टू 100. सो x इक्वल टू 20 लीटर. सो 20 लीटर वाटर ऐड करने से उसका क्या कंसेंट्रेशन, यानी मिल्क का अमाउंट 20% हो जाएगा टोटल मिक्सचर का. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. तो मैं ये आपको बताया, कुछ 7-8 प्रॉब्लम शायद किए हम, 8 प्रॉब्लम बताया कैसे परसेंटेज के ऊपर. इस मतलब ये ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एप्टीट्यूड में. तो आप थोड़ा बस कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी करना, और सब चीज कैलकुलेशन को छोड़ के और जो कंसेप्ट वगैरह है मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ, बस थोड़ा ध्यान में रखना कैलकुलेशन को, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करना. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.